हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यू कैन सी माई डॉटर इज़ lying down here. She's playing. सो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ. आई वॉज़ नॉट इवन नाउ आई एम नॉट श्योर कि मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग टू इंडिया टमोरो. This is Sunday evening. It's 9 o'clock now, and tomorrow we will be traveling. Exactly, my flight is at 9 o'clock. So of course ये vlog तो आप लोगों को तब मिलेगा जब मैं already travel कर चुकी होंगी. And we were busy because packing तो बहुत सारी थी ही, shopping भी बहुत सारी थी. Literally we decided कि हम लोग इस बार कुछ shopping नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ भी नहीं लेंगे. और उस नहीं लेने में भी काफ़ी चीज़ें हो जाती है, लाइक छोटी मोटी चीज़ें तो यू स्टिल हैव टू टेक द बेसिक स्टफ फॉर अस, आर नेसेसिटीज़ इन किड्स. एंड वहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर कुछ लेना है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वी हैव टू टेक समथिंग. सो 2-3 दिन से वी आर आउट शॉपिंग एंड shopping. Somehow we just finished shopping, and yesterday was a very horrible day. Early morning we went for COVID test. Firstly तो रूल्स बहुत ट्रिकी है क्योंकि एवरी टाइम इट्स चेंजिंग. और बॉम्बे एयरपोर्ट स्पेशली दे हैव इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर 7 days, विच वी कैनॉट डू बिकॉज वी हैव 2 kids and they both age under 10 years. So it was quite difficult for us to manage with 2 kids institutional quarantine, and we have to travel. We waited a year to travel back to India, and it's literally a year because last January हम लोग वापस आए थे, I remember. So I have to go this January. It's been a year and we never go after so long period of time. So anyways, firstly we had to figure out कि बॉम्बे का quarantine क्या system चल रहा है, and then we came to know कि we will get exemption if we have 2 kids under 10 years. So we have 2 kids under 10 years. I don't know exactly क्या procedure है कि even if 1 kid you have, you can travel or whatever it is. I'm not sure about all that, but we may get exemption. We have to apply on the online portal and everything. So firstly we have to figure out that process ki kya hai, and once we understood, after that we have to go for a COVID test. Uska COVID test we haven't done it. I know coronavirus, it's been a year almost, but alhamdulillah we were fine. We never have to go through the COVID test or PCR test. So yesterday for traveling, when we have to do PCR test, तो we did not know कि कहाँ होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या चार्जेस है. तो जैसे माई हस्बैंड केम टू नो फ्रॉम समवन कि शारजा का जो सेहा वाला कोविड टेस्ट वाला है, दे आर गुड. एंड ही रेड फ्यू थिंग्स ऑनलाइन कि सेहा की सर्विसेज बहुत अच्छी है, एंड दे वर चार्जिंग वेरी लो. दे हैड ओनली 85 dirham चार्जेस फॉर पर पर्सन. तो वी थॉट कि ओके, एंड इट्स अ ड्राइव थ्रू. दिस इज़ व्हाट वी वांटेड कि ड्राइव थ्रू टेस्टिंग हो जाए, और चार्जेस इतने कम थे, सर्विस अच्छी थी. वी हर्ड की रिजल्ट्स काफ़ी एक्यूरेट है एंड ऑल दो स्टफ. तो वी डिसाइडेड विल गो विथ सेहा, एंड वी टुक एन अपॉइंटमेंट. एंड अपॉइंटमेंट था तो हम लोगों को लगा कि वी विल टेक एन अपॉइंटमेंट, और अगर 3 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 3 बजे हम लोग टेस्ट कराएंगे एंड इट विल बी डन. तो वी लेफ्ट हाउस एट 2 o'clock. इट वॉज अराउंड 45 minutes ड्राइव फ्रॉम आर हाउस. वी रीच्ड इन 30 minutes. बट वहाँ पे पहुँचने के बाद वी सॉ द क्यू, लाइक कम से कम 1.5 किलोमीटर का क्यू था. हम लोगों को सिर्फ गाड़ियाँ दिख रही थी, एंड वी वर लाइक कि शायद अब आएगा. वी वर टेकिंग राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, एंड देयर वर सो मेनी पुलिस एंड एवरीवन वाज स्टैंडिंग चेक करने के लिए. एंड वी थॉट कि अब आएगा. 3 घंटा वी वर इन लाइन. वी हैड एन अपॉइंटमेंट फॉर 3 o'clock and it was around 5:30 and we were still waiting. And around 5 o'clock my husband was like कि मेरा petrol, because when your car is at a halt it uses more petrol. I did not know about that, even though I drive. I had no idea कि this happens. तो petrol was almost finished. My daughter Anaya was on a verge of busting out. वो already बहुत रो रही थी, and I had to feed her and everything. I was somehow we were managing. और गर्मी थी. I know it's winter season and it's a good ठंडी this time, but that afternoon time was बहुत गर्मी हो रही थी. और
पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने आया था. एंड जस्ट व्हेन वी वर अबाउट टू रीच, माई हस्बैंड वाज लाइक वी कैन नॉट इवन वेट 5 more minutes, क्योंकि अगर यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया. एंड यूएई में इफ़ यू अगर आपका पेट्रोल कहीं पे ख़त्म होता है बाहर, यू विल गेट अ फाइन. प्लस हाउ विल टो द कार आउटसाइड. Secondly, अगर हम there is a Carrefour services over here, if you know, we were considering that, but Carrefour services doesn't come off road, and it was kind off road over there. So this description is going for so long. But anyways, I'll wrap it up as soon as I can. We reached there almost, and वहाँ पे हम लोगों को एक वॉचमैन दिखा, and we asked him कि please can you make it quick, my daughter is crying a lot, she's just 4 months and पेट्रोल ख़त्म होने वाला है. एंड ही वाज लाइक नहीं सर, आपको वेट करना ही पड़ेगा, और कम से वी कैन नॉट टेक एनीवन इन बिटवीन, क्योंकि ड्राइव थ्रू है, इंडिविजुअल पर्सन होता वी कुड हैव जस्ट टेकन, बट कार तो यू हैव टू टेक द वे इट इज़ गोइंग. फिर ही सेड इट विल टेक 1 more hour जस्ट टू एंटर द गेट, उसके अंदर और हाफ एन आवर कम से कम आई वॉज एक्सपेक्टिंग. तो माई हस्बैंड एंड आई लुक्ड एट ईच अदर एंड वी टुक अ U-turn. After waiting for 2.5 hours, we had to take a U-turn. It was so irritating for me. And हम लोग वहाँ से निकले, पेट्रोल पंप गए, हम लोगों ने पेट्रोल भराया, एंड वी हैड नो क्लू कि अब क्या करें, बिकॉज इट वॉज एन ऑनलाइन पेमेंट तो उन लोगों ने ऑनलाइन ले ली थी, और वापस तो नहीं जा सकते थे. नो चांस वी कुड हैव गॉन बैक, क्योंकि जब हम लोग निकले हैं वहाँ से, वी सॉ द क्यू गॉट इवन लॉन्गर. अगर हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर से स्टार्ट किया होगा तो क्यू ऑलरेडी 3 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट हो गई. तो वी डिसाइडेड वी आर नॉट गोइंग बैक, वी कैन नॉट. एंड वी कॉल्ड अदर हॉस्पिटल्स, एंड वी केम टू नो कि मेरी बिल्डिंग में जो हॉस्पिटल है उसमें भी कोविड टेस्ट होता है, और एक नियर बाय एक और हॉस्पिटल है NMC, उसमें भी कोविड टेस्ट होता है. So because NMC, we always visit NMC for pediatric visits. So we went to NMC, and hardly half an hour mein they had a very good service. Even the test they done was like not even half an hour. She just called my name, she made me sit, she said put your this down mask, and she just took like this. It was a little painful thing to do though, but it was very quick. And charges was like 150 or 180 dirhams. I think 150 or 180, something between that. So ऑनलाइन वाला जो पेमेंट हमने 85 हम दोनों का किया था वो तो गया, पर दिस वन वाज 150 एंड इट वाज गुड. एंड आज हमारे रिजल्ट्स भी आ गए हैं, इट वाज नेगेटिव, दोनों के हमारे रिजल्ट्स अभी आए हैं. सो वी आर फाइनली, आई एम एट अ रिलीफ कि मेरी थोड़ी सी पैकिंग हो गई है, मेरी शॉपिंग हो गई है, ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई. माई हस्बैंड इज़ आउट नाउ, ही हैज़ गॉन टू NMC. जो रिजल्ट्स आए हैं वो ही विल पिक इट अप नाउ, और ऑलमोस्ट थिंग्स आर डन. सो नाउ आई गॉट टाइम, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग बता दूँ कि वॉट आई एम गोइंग थ्रू. आई शो यू, माई हाउस इज़ अ complete mess right now. वन ऑफ माई एक्चुअली 3 बैग्स लेके जाने का प्लान था, और तीनों ही बैग्स ऑलमोस्ट पैक्ड हैं, पर ये मेरी डॉटर का हैंड कैरी है जो पिंक वाला देख रहे हैं, ये और दुपट्टा वगैरह जो ऊपर दिख रहा है, ये हम लोगों को लेके जाना है. तो ये मैंने इसीलिए यहाँ रखा है कि मैं याद रखूँ कि ये मुझे पैक करनी है ये चीज़ें. और ये बैग तो पैक हो गया है. So basically we are taking 3 bags, 2 big, 1 small, and two hand carries, and maybe 3 hand carries because मेरे husband का laptop bag होगा. तो packing is almost done hopefully, and now I'm going to make dinner. This will be the last day I'll cook because tomorrow I'm not gonna cook anything. Maybe breakfast or something I'll cook, but other than that, because मैंने kitchen भी almost wrap up कर लिया है, मैंने फ्रिज खाली कर दी है, क्लीन कर दिया है. कुछ चीज़ें जो फ्रिज में थी वो मैं किसी को दे दूँगी. आई शो यू मेरे फ्रिज की क्या हालत है.
ये बास्केट मैंने सारी खाली कर दी है और ये यहाँ पे मैं ये दूध रखती हूँ जो फ़िलहाल यहाँ रखा हुआ है। And now I'm going to cook, so I don't think I'll be shooting any recipes or anything today, but inshallah I will shoot vlog while traveling, and see you then. Bye bye. So I know I said I won't be sharing anything else after this, but then I thought this is gonna be my last meal before traveling. This is the last time I'm gonna cook. I will be making breakfast next day morning, but I won't be sharing any recipes or dinner preps or anything. So I said let's share this last meal, and this is gonna be an interesting dinner. Actually, I just wanted to finish off whatever I had in my kitchen and clean up all the kitchen. So I had a few around 500 grams of boneless chicken, so I thought I'll make chicken handi. This is not exactly handi, it's a chicken jalfrezi kind of recipe. This is not a particular recipe of anything, this is just how I made it. Without any particular recipe, but this was somewhat similar to chicken jalfrezi. If you know how to make it, you will understand this recipe is very similar to that one. So nothing much, I just added a little bit of oil and then added few garam masala powder, not powder, whole garam masalas, and then I added finely chopped onions, sauteed it a little bit, and then added chicken pieces and ginger garlic paste, again sauteed, and then I added powder masalas, the routine spices, haldi, red chili powder, cumin powder, coriander, and then I added chopped tomatoes. And once I sauteed everything well, here I have switched off the flame, because if the flame is very high and I add yogurt, it's gonna get bad. So I have switched off the flame and I have added yogurt, and after adding yogurt and sauteing it a bit, I closed the lid and let it cook for a while. And this is after I opened the lid again. This is how it looked. I let it cook for a little more while, and then I will add capsicum. I have sliced capsicum, and before adding capsicum, I think I have already added capsicum. I have missed the clip. And here I am adding cooking cream. I also wanted to finish off the cooking cream, because when I'll come back, this will be expired, so I just wanted to utilize whatever is left. And you can see I have added the capsicum, if it's visible in the video. And here I am adding garam masala. This is a basic garam masala. This is from Shan. I have added around a half teaspoon of garam masala, and it's done. I'm not gonna cook more after adding garam masala, and I have switched on off the flame. So here I am making malai tikka, chicken malai tikka, and I have taken boneless cubes, and I have added 2 tablespoons of yogurt, 2 tablespoons of fresh cream, and cumin powder, coriander powder, and this is green chili and coriander paste. This was supposed to be thick, but I added a little more water and it was so runny. It isn't supposed to be like this. So to balance it out, I added a little cornstarch. I anyways add cornstarch, but I added a little more, and then I have added lemon juice and ginger garlic paste. I was supposed to add earlier, but doesn't matter, I have added it now. And also some salt, and I had also added little bit of tenderizer, and I have used Shan tenderizer, and now I have put it on sticks, and alternatively I have added capsicum, chicken, onion, and the same way I have did all of them. And once it is cooked on the pan, I am grilling it like this, as you can see. So this is the easiest way, and
I have to make very less quantity. This is only for two of us, and even Afia is gonna eat this one because she loves it. If I cook boneless chicken anyways, she loves it. Can also cook this along with charcoal, like you can simply put one big piece of charcoal on the cooktop. While I'm grilling this here, I'll simply add one charcoal, and the charcoal flame and the gas flame both will give it grilling marks, and the smell will be amazing. So after having dinner, we did not do much. We had a little bit of packing to finish off, so we did that, and tried to sleep a little bit early because we had a flight next day evening, and my husband had to attend office next day, and he will be traveling with us, but before that he will be attending his office. So that's all for today, guys. I hope you like this video and the recipes, and keep watching my vlogs. Please do like, share and comment, and see you in my upcoming vlogs. Till then, take care. Bye bye.